ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बच्चा लोग बताइए. सब लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? कभी ना कभी तो देखा ही होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? क्या है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? क्या डेफिनेशन है इसका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. जिसको हम डिफाइन करते हैं करंट. ठीक है, या चार्ज पर यूनिट टाइम. बट यहां देखो, ध्यान से देखना. As we talk about electric current as rate of flow of charge, that means charge per unit time, there might be a case where the flow of charge at every instant changes. There might be a possibility, right? Like at every instant, the rate of flow or the flow of charge through a cross section changes. So in that case, how will you define? So to cater those things, we define electric current as first as average current. पहला क्या डिफाइन करते हैं? Average current. कि average current क्या होता है? As if you can remember or if you can recall that velocity term that we have studied in kinematics, when we define velocity, what is velocity? Rate of change of position, right? Displacement by time. So there we defined average velocity and instantaneous velocity. Why do we define average velocity? Because when we talk about velocity in a time interval, तो क्या define करेंगे? Average velocity. Similarly, if I ask you what is the current that has flown in a time interval delta t, so what will be the answer for this average current? So average current will be denoted as IAVG. ऐसे define करूंगा मैं, और I can write like this. If I denote like this, this means average. ये जो symbol है उसका meaning क्या है? This means average. If I write x and then if I use this symbol, what is the meaning of this? This is the meaning of average. Mean लिया मैंने. So average current को कैसे define करते हैं बच्चा लोग? तो I average will be defined as total current flown through a cross section divided by total time taken. तो मान लो डेल्टा t में फ्लो किया डेल्टा I करंट, तो डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, नॉट I, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा t. ठीक है बच्चा लोग? अच्छा, let me ask you this question, that if there is a cross section like this, if there is a cross section like this, and through this cross section the charge has to flow, some charges has to flow. तो imagine करो कि through this cross section, let us say Q1 is equal to plus 5e charge has moved in rightward direction, Q2 is equal to minus 3e has moved in this direction. ठीक है? Now Q3 is equal to, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं so that कि समझ में आए आपको. Let me erase this and draw it properly. Q3 is equal to 6e has moved in rightward direction. ठीक है? So these many charges has moved or he has crossed this cross section in time. Let me take this as an example. So in time 3 seconds, or let me write this only, in 3 seconds, in 3 seconds following की मतलब जरूरत नहीं है. Yeah, in 3 seconds, charges which have crossed the cross section is shown in figure. ठीक है? Find out the average current, or find the value of average current. बताइए क्या होगा आंसर? Find the value of average current. So I'm getting some answers 8/3. Okay, direction भी बताना होगा आपको. You have to tell the direction also. See one more thing. What will be the direction of current? What will be the direction of current? Direction of current will be, let me write it here. थोड़ा इसको नीचे करता हूँ. I missed that part.
direction of current is same as that of motion of positive charge. ठीक है, since positive charges are not there which can move, तो क्या बोलते हैं, you can also write direction of electric current will be opposite to the direction of flow of electrons. That also you can say. Okay, but अभी के लिए क्या, पॉजिटिव चार्ज का जिधर मोशन होगा उधर ही हमको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है. अब बताइए यहाँ पे, यस करेक्ट है. सो डायरेक्शन ऑफ करंट कैन आल्सो बी अज्यूम्ड एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ बताओ क्या आंसर आएगा. 8/3 लेफ्ट राइट, ओके, सब अलग अलग है. What is the net charge that is flowing through this cross section? Okay, few of you are saying right word, few of you are saying left word. Mixed है. देखो बताता हूं. So this was the cross section, right? ये था cross section. तो net current किधर flow किया, ध्यान से देखो. 5E and 6E, they have moved in this direction. All right, they have moved in this direction. अभी के लिए थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको लाऊंगा. अभी के लिए 3E रखो, खाली डायरेक्शन चेंज करता हूं मैं. आई एम जस्ट कंसिडरिंग द डायरेक्शन. ओके, आई एम जस्ट कंसिडरिंग द डायरेक्शन की डायरेक्शन मैंने उल्टा किया है. तो राइट वर्ड कितना गया, 5E, ये कितना गया, 6E. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस Q1 and Q3, what is the current that will flow through it? So I'll say इनके कारण करंट कितना फ्लो करेगा बच्चा लोग, तो Q1 plus Q3 divided by 3, ये हो गया मान लो I1 करंट. Because of these two, what is the direction of current? Towards right, because they are what? Positive. Towards right, they have moved. So this is I1. Can I say because of this part, because since charge is moving in leftward direction, so because of that there will be one more current that will flow through it. इसको मैं कैपिटल I1 से लिखता हूं, कैपिटल I1. Because of this, what is the current that will flow through it? So that will be 3E divided by 3. तो उसको मैं बोलूंगा Q3 divided by, sorry, Q2 divided by 3. Let me call this as I2. So what will be the net current? So what will be the net current? Will be equal to, देखो, this is right word, this is left word. तो क्या मिलेगा आंसर? I1 minus I2. Because I1 बड़ा होगा, I2 छोटा होगा. Yeah, they are uploaded, Rahul. Please check properly. I have uploaded just 5 minutes after the class. I1 का मतलब क्या है? Q1. Q1 कितना है बताइए? 5E plus Q3 is what? 6E divided by 3 minus I2 क्या है? I2 कितना बच्चा लोग? I2 is what? 6E divided, sorry, 3E divided by 2. 3E divided by 3. तो करेक्ट आंसर क्या मिला? तो 5 plus 6, 11. 11 by 3 minus E. तो करेक्ट आंसर 8E by 3. ऑलराइट बच्चा लोग, समझ में आया क्या? So this is the net current that will flow through it. In which direction? Which is having higher magnitude? I1 is having the higher magnitude. So towards right. Towards right. This is the direction. Yes, Pratish, you can do directly also. ठीक है. What is the other method? I will find out what is the net charge that will flow through it. तो net charge कैसे निकालेंगे? If positive charge is moving in this direction, I can consider negative charge is moving in this direction of the same magnitude. All right. So I can consider, I can replace this Q2 as direction in this one with the negative sign. ठीक है. तो if positive charge moves in this direction, I can assume there is a 3E electron. That means a charge of minus 3E is moving in rightward direction. You can also do that. So in that case, what is the net charge that will flow through it? 5E plus 6E minus 3E. So 8E will be the net charge that will flow through this cross section area towards right. ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया क्या? पॉजिटिव रे, बाकी सारे पॉजिटिव ही रखा मैंने. रहता तो बताता ना, हटा तो दिया था. क्या बार बार पूछता है कि सवाल तो लोग रहे. ले खुश अभी नरेन, वेट मत रे, रुको ना, बताता हूं मैं. बसनगौड़ा, बिकॉज मुझे 3 पसंद नहीं है तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. आई डोंट लाइक 3.
That is why I have divided by 3. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? करंट क्या है? आर यू इन भांग का असर? क्या सो रहा है क्या बच्चा तू? करंट क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. व्हाट इज दैट डेल्टा टी हियर? 3 सेकंड. दैट इज व्हाई आई हैव टू डिवाइड 3 सेकंड हियर. इवनिंग इफेक्ट. चार्ज पर यूनिट टाइम. टाइम कितना है? 3 सेकंड. दैट इज व्हाई आई हैव डिवाइडेड 3 सेकंड. व्हाट इज दिस डाउट बच्चा? प्लीज थोड़ा concentrate properly. Okay, please concentrate properly. I request you, please concentrate properly. चलो आगे बात करते हैं. अगला, so rate of flow of charge हो गया, direction of current same as that of positive हो गया. Now let me ask you one simple question here. बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है? If this is one wire, this is another wire, and this is the third wire. From here, charge, let's say Q1 charge is flowing through it. From here, Q2 charge flow through it. All right? क्या बच्चा ध्यान से देखो, Q1 चार्ज यहां से फ्लो किया, Q2 चार्ज यहां से फ्लो किया. In time t, charges Q1, Q2 flow through 2 wires as shown. ठीक है? Find the current in the third wire. बताइए कितना करंट फ्लो करेगा थर्ड वायर से? चलिए चलो. बताओ चलो, इसका आंसर बोलो. किशोर, यू डिसाइड ना, यू डिसाइड. What will be the answer? Everybody is saying Q1 plus Q2 by T. Why Q1 plus Q2 by T? Why Q1 plus Q2 by T? Why did you add them? तुमने ऐड क्यों किया? Why didn't you consider the directions and all here? तुमने इनका डायरेक्शन क्यों अज्यूम नहीं किया? Why didn't you consider them the directions? Reason क्या है उसका भी बताओ आंसर. Tell me the reason why we didn't consider the direction. ये जीरो वाले थोड़ा दिमाग का दही मत कर अपना. जीरो कैसा जीरो रे? Why जीरो? सिंपल सी बात है सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या बात करेंगे? या why we'll consider them scalar quantity. उसका रीजन आपको पता होना चाहिए ना. Why do we consider force as a vector? रीजन क्या है? To explain force, to explain the effect of force, you need direction also. If you change the direction, the effect of force might change. तो उसके कारण क्या? We have to consider force as a vector quantity. But यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो. Current depends on the charge that will flow through a cross section in 1 second, right? Now, if Q2 charge is moving through it, Q1 charge is moving through it, where these charges will go? Can you destroy them? Can you destroy them? Can they disappear all of a sudden? They cannot. So if Q1 charge moves from here to here, if Q2 charge moves from here to here, so what will be the charge that will move in this wire? Simple, Q1 plus Q2, because where they'll go? As you can conserve mass, similarly charge. As you can conserve mass, similarly charges will also be conserved. You cannot destroy them, you cannot create them. They are related with the mass. They are related with mass. ठीक है? So what will be the charge that will flow through it? So charge flown through third wire in time t will be equal to Q1 plus Q2. ठीक है बच्चा लोग? तो what will be the current then? So current will be equal to Q1 plus Q2 divided by T. Now tell me, do we need to get, or do we need to describe whether the direction of Q2 is in this direction or in this direction? It is immaterial what is the direction of charge. ठीक है? Even if I am having a curvilinear part, curvilinear wire like this, ऐसा मैंने draw किया, and the charge moving through it is Q2. Does it matter like whether this is straight line or a curve part? It doesn't matter.
तो डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां पे व्हेन वी एडेड द डायरेक्शन, व्हेन वी एडेड द करंट, डिड वी कंसीडर व्हाट इज द डायरेक्शन हियर? नो. सो क्या कहते हैं, टू एक्सप्लेन करंट यू माइट नीड टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, but while addition of the current you don't need the vector addition of current, or sorry, vector addition of or vector rule of addition. To add currents, do you need vector addition here? No, you don't need the rule of vector addition. You can directly add them scalarly. So that is why we don't consider them as a vector quantity. We don't consider current as a vector quantity. ठीक है, आपके लेवल पे अगर मैं बात करूं then consider current as a scalar quantity. ठीक है, बट वो टेंसर वेंसर आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूं. ठीक है, चलिए, तो अभी क्या आपके सिलेबस में क्या है, इधर टेंसर, इधर स्केलर और वेक्टर. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट करंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. रीजन क्या है आप देख लो, फर्क नहीं पड़ता है कौन से डायरेक्शन से आ रहा है. गॉट इट गाइस, समझ में आई बात सबको? वेरी गुड. सो चार्ज यहां पे करंट कितना मिल गया, Q1 plus Q2 by T. अच्छा, what if I ask you to find the instantaneous current? As you have studied this instantaneous velocity. Similarly, what if I ask you what is the value of instantaneous current? ठीक है, तो क्या लिखेंगे, instantaneous current. ऑलराइट बच्चा लोग, तो देखो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, बस देखा क्या कितना है बताओ. At an instant, the moment you have seen something, tell me the value of that, right? The moment you have seen that particular current, tell me what is the current. So at a moment, right? So can I say that time interval should be approaching towards zero? So I can define this instantaneous current as delta q by delta t, where delta t must tend to zero. ठीक है बच्चा लोग, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, उसको लिमिट ऑपरेशन बोलते हैं, राइट? सो लिमिट डेल्टा t tends to zero. And what is this bacha? Limit delta t tends to zero, delta q by delta t. We define this as dq by dt. So instantaneous current will be dq by dt. याद रहेगा सबको? So please remember this. Instantaneous current will be dq by dt. What will be average current? So total charge flown through the cross section divided by the time taken. So that will be the definition for average current. दोनों definition कुछ भी पूछ सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जांपल पूछता हूं, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी एलिमेंट्री. इफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वेरीज एज Q is equal to 3 plus 2t cube, then find the current at t is equal to 2 second. बताओ क्या होगा आंसर. If charge flown through a cross section varies as Q is equal to 3 plus 2q, then find the current at t is equal to 2 seconds. बताइए जल्दी से. What will be the answer? 24, 27 by 2. अये यो 19 by 2. अरे इतना आसान में गलती कैसे कर सकते हो? How can you just? ओहो बच्चा लोग, please don't commit silly mistakes. Okay, so most of you are saying 24. Few of you are saying 12 also. क्या देखो, there's only 3 reasons why you're getting wrong answers. First, भांग खा के आया है. That is the primary reason. Second, you don't know how to differentiate. Third, you don't know how to put the value. Because current का definition तो अभी भी बताया है, ये तो सामने दिख रहा है, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है. Still, I'm getting so many mixed reactions. 24, 22, 12, 27, 16. Oh, क्या बात है. 27 by 2 also, 19 by 2 also. क्या बात. अरे यार इतना गोली मार दो मेरे को इधर ऐसे कनपट्टी पे. घर से ऐसा टॉय वाला होता है ना, गोली बंदूक मिलता है ना, टॉय गन, वो लाके मेरे ऊपर ऐसे तान दो, सिर्फ ऐसे ट्रिगर दबाओ, मैं अपने आप मर जाऊंगा. You don't have to even shoot. Just by seeing that toy gun, you don't have to bring a original gun. Just bring a toy gun, point at me, and then say, "I'll shoot you, sir." मैं मर जाऊंगा. Why are you killing me by giving these kind of answers here?
देखो आंसर क्या है, देखो करंट क्या होता है, dq by dt, राइट? सो I is equal to dq by dt. So I will be equal to d by dt of, एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं, देख लो, t plus 3 plus 2 tq. So I will be equal to d by dt of 3 plus d by dt of, और धीरे जाना है क्या, 2q. Now differentiation of constant with respect to time will be laddu, तो लड्डू खाइए. Differentiation of 2tq will be 2 into 3 into t to the power 3 minus 1. So the final answer for current as a function of time will be 6t square. So current at t is equal to 2 second, current at t is equal to 2 second will be equal to, I can be written as 6 into 2 ka square. So answer would be 24. What is the SI unit of current? Ampere. 24 ampere. अरे मेरा भूत आगे पढ़ाएगा. समझ में आया क्या? अभी इसमें कितना टफ था यार. How can you give 27 as the answer? 2 सेकंड में पूछा था, 3 सेकंड से पूछा था, 2 सेकंड में पूछा था. So they like quite surprising. Few of you were saying 27 by 2 also. 19 by 2 also. 0. चल क्या रहा है भाई फॉग के अलावा? थोड़ा सा दिमाग को शांत करके रखो, पानी वानी पिया करो, ठीक है? आगे बात करते हैं. बच्चों वाला भी नहीं रहे, बच्चा भी शर्मा जाएगा. बच्चा ही बोलेगा क्यों पढ़ रहे हो 11th में, तुम्हें से ये ना बन पा रहा है 12th में. चलो आगे देखते हैं, ठीक है? अगला सवाल नहीं, कुछ आगे थ्योरी पढ़ते हैं. इजी क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो गया. ओके ठीक है, एक्सीडेंट होता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, एवरेज करंट डन, छोटा मोटा क्वेश्चन कर लिया. देन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, गॉट इट. इंस्टेंटेनियस करंट, गॉट इट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, हो गया करेक्ट. अच्छा अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की. करंट डेंसिटी बताओ, करंट डेंसिटी क्या होगा? तो मत बोलना सर करंट बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ नहीं है. सो करंट बाय वॉल्यूम इज नॉट करंट डेंसिटी. इसको डिफाइन किसी और तरीके से किया गया, ठीक है? लेट मी अज्यूम अ क्रॉस सेक्शन हियर, ठीक है? एक मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया, ये या नाउ इट लुक लाइक, ठीक है? नाउ थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन लेट अस से टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट इज I, ठीक है? टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इज लेट्स से डेल्टा I, delta I, and the cross section area for this is let's say delta S. cross section area for this is what? delta S. तुम्हें अगर एक लिखना है तो delta A भी लिख सकते हो, no problem. So I have considered a cross sectional area of delta A through which a current of delta I is crossing through it, ठीक है? तो करंट डेंसिटी से क्या बोलेंगे इसमें? एक पहला केस क्या है? If a uniform current crosses a cross section area or a cross section of area delta A normal to it, ध्यान से सुनना, normal to it, then current density that will be denoted by J, it will be denoted by J, is defined as J is equal to delta I divided by delta A n cap, ठीक है? and what is the direction of n cap? तो एरिया का जो डायरेक्शन होता है वही होता है n cap. और यू कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वही डायरेक्शन J का हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, सो इफ कांस्टेंट करंट, यूनिफॉर्म करंट, मतलब हर जगह टोटल करंट कितना हो गया? डेल्टा I. तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जो टोटल करंट कितना फ्लो किया, दैट इज डेल्टा I. एंड इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डेल्टा A, देन डेल्टा I by डेल्टा A विल बी कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी. ठीक है बच्चा लोग, समझ में आई बात? अच्छा, व्हाट इफ थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, इमेजिन करो ऐसा,
Let me consider one more cross section here. And if through this part I1 current flows through it, ठीक है? Through this part some I2 current flows through it. At this junction, at this cross section, some I3 current flows. N cap, see मैंने डायरेक्शन देखो, J cap को क्या? J is what? A vector quantity. Ganesh, J is a not J Kiran, J is what? A vector quantity. तो N cap क्या है? N cap is the unit vector. Just to make sure that J is what? A vector quantity, we have to give the direction to it. How do we give the direction to it? Current is a scalar quantity, area is a scalar quantity. How can we say that this is a vector quantity? So to explain this in vector terms, I have introduced a unit vector. कौन सा direction है? Along the direction of current. All right. Ganesh, this is cross section. I don't want to write पूरा ना, तो मैंने लिख दिया cross section. ठीक है? आगे देखो. So now I was talking about in this cross section, at each and every small point or each and every point, some different current flows through it. ऐसा कुछ मान लो बताया गया आपको. Then how will you find what is the current density at a single point? Because here I can say everywhere the current density is delta I by delta A. Here I can say the current density is what? Delta I by delta A. Because everywhere the same current is flowing. But what about this one? यहां कैसे निकालें? तो यहां पे क्या लिखना है? If different current crosses or flows through different point, ठीक है? Then if I ask you what is the density, what is the current density at let's say this point P, छोटा सा मान लो ये point P है, यहां पे क्या होगा? What will be the current density at this point P? So what will be the answer? I will say in that case now this delta A, initially this was what? Delta A, पूरा delta A. So now I can say, let us say the area of this part is छोटू सा dA. Let us say the current that is flowing through this is what? dI. ठीक है? तो क्या बोलेंगे बच्चा लोग? So I can write current density at a point P will be written as dI divided by dA. ठीक है बच्चा लोग, क्या लिखेंगे? dI divided by dA. What is dI? The small current that is flowing through this छोटू सा cross section. Let me draw it here. P को इधर रखो और ये छोटू सा जो एरिया यहां पे दिखाया, that is what? dA. This is dA. Okay? तो dI by dA will be the current density at point P. ठीक है बच्चा लोग? नहीं ऐसा नहीं बोलने का. Don't try to integrate dI by dA. dI by dA को इंटीग्रेट करके टोटल नहीं पूछा है आपसे. Just tell me if you're having, let us say if you're having a mixture of sand and कुछ भी मान लो iron fillings, ठीक है? कुछ एक आपके पास मिक्सचर है, सैंड है, आयरन फिलिंग्स है, शुगर है, सबको मिला के आपके पास ऐसा कुछ एक मिक्सचर आया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. You are getting some density here as rho 1, here density as rho 2, here density as rho 3. If I ask you to find the density of this pura, will you add all of these things? Will you add all these three densities or all the densities at each and every point to get the total density? No. Density of this substance will be first of all unknown. That will be completely impossible to find out because there's so many randomness that is going on, right? But just to find out the density of this, like which will be close to the true value, I can find the average of it. You can find, okay, average value of this density can be called as the density of this part, but you will not add them, right? So that is why if I ask you the density of through this pura area, you will not integrate this. You might find the average. You might find the average of it to find out the current density through this total बड़ा सा area. थोड़ा दिमाग लगाना, हर जगह इंटीग्रेट नहीं करना होता है. Got it, विजय लक्ष्मी? ठीक है, बहुत बढ़िया. All right. See, if you read the first statement for this current density, I have written one word here, like one word here, that is normal. Why did I introduce this normal? It is very, very important. It is in the definition.
क्या है देखो, if a uniform current crosses a cross section of area delta A normal to it, what if current or what if charge flows through a cross section not normally but at some inclined angle, then what will be the current density? So for that case, let me take an example. If current is not perpendicular to cross section area, then what will be the current density? तो उसके लिए मैंने मान लो ऐसा कुछ एक क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन किया. लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ऑलराइट, एंड दिस इज द करंट डायरेक्शन. This is the direction of current. So this is the total current. At each and every point, the same current I is flowing through it. Okay. So total current that is flowing through it is what? I. Total current that is flowing through it is what? I. बहुत बढ़िया. अब बताओ, if I ask you to find out what will be the current density through this cross section, if cross section area of this is capital A, and the normal to the plane of this, is making an angle of theta with it. ठीक है बच्चा लोग, तो ये होता है एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है? n cap. So direction of area is what? The n cap. So now tell me what will be the value of J. Tell me what will be the value of J. जल्दी से बताइए. What happened संकेत? जोक पढ़ रहा है क्या? संता बनता का तू लैपटॉप पे. बताओ बच्चा लोग, what will be the J value here? At least find out the magnitude. At least find out the magnitude. बताइए जल्दी से. Yes, क्या होगा आंसर? Yeah, most of you have got the correct answer. That is I divided by क्या लिखेंगे? A cos theta, because component of this area, इस area का ये ना, component of this area along the current will be A cos theta. So if I write this as dA, छोटा सा मान लो मैंने बोला dA, and if I write this part as delta I, then what will be the answer? I'll write delta I divided by delta A cos of theta n cap. Alright guys, समझ में आया सबको क्या करना है? So if the direction of current is not normal or perpendicular to the cross section area, if the angle made by the flow of current and the normal of area is theta, then this will be the current density. So J will be equal to delta I divided by delta A cos theta into n cap. n cap क्या है? Direction of the area. इसी direction में J होता है. समझ में आया बच्चा लोग? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा. Let me make it draw this in a box. Okay, why not delta I by cos theta? Delta I by cos theta क्या बोल रहे हो? ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया सबको? चलो देखिए, अभी बात करते हैं हम लोग how can I define current in terms of J and area. ठीक है, तो can I write this from here? I can write delta I is equal to J into, let me write the magnitude here. Delta I can be written as J into delta A into cos theta. Tell me guys, can I write like this? Delta I is equal to J into delta A into cos theta. Can I write like this? Yes, sure. So can I also define this delta I as J dot delta A vector? If I defined area as A vector, so can I write delta I, that means the total current can also be explained or denoted as J dot delta I, delta A. Yeah, dot product because cos theta है ना, देखो. ठीक है. What will be the direction of area? Direction of area will be normal to the plane. ठीक है, तो जो भी प्लेन होगा उसके नॉर्मल में हम लोग एरिया का डायरेक्शन लेंगे. So if J is given to you, that means for an area, for a small area, if I give you the current density, can you find the current flowing through it?
So for that reason only, for that purpose only, I have derived this relation that current through an area can be written as J dot delta. ठीक है बच्चा लोग, तो इसको प्लीज याद रखना, बहुत काम की चीज है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। If current density through a wire is given by J is equal to 3 I cap, what will be the unit of J bachcha log? Ampere per meter square. So if current density through a wire is given by J is equal to 3 I cap ampere per meter square, and cross section area is given by 3 I cap plus 5 J cap मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है, बट एनीवे सॉल्व खाली करना है ना। जस्ट इमेजिन व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट, कितना मोटा रॉड हो जाएगा, सॉरी वायर हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द करंट थ्रू दी वायर। बताओ बच्चा लोग कितना करंट होगा। फाइंड दी करंट थ्रू दी वायर। यस करेक्ट, डायरेक्ट बताया। अच्छा ये क्या बता रहा है, देखो ध्यान से सुनना। ये क्या बता रहा है, करंट डेंसिटी थ्रू दी वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दे हैव टोल्ड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसको अगर 4 कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे मैग्नीट्यूड बताना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया? तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना बच्चा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन क्या है? तो 3 I कैप 4 J कैप। मतलब डायरेक्शन क्या? आई कैप जे कैप के फॉर्म में है, कहीं इसके बीच में कहीं ऐसा डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज गिवन बाय द वेक्टर हियर, एंड करंट डेंसिटी इज गिवन टू एज 3I एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द करंट हियर? तो करंट क्या बोलोगे? तो डेल्टा आई विल बी इक्वल टू जे डॉट डेल्टा ए और द एरिया। ऑलराइट, सो 3I कैप डॉट 3I कैप प्लस 4 J कैप। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 9 एम्पियर। दैट्स इट। 45 into 10 to the power -2। मोहित क्या हो गया बच्चा? कैसे? हाउ? चेतन 15 कैसे आया बच्चा? 12 कैसे आया? डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालना था क्या तुम लोगों को? 9 + 12। नरेन नरेक पक्का भांग खा के आया तू मिल मेरे को कॉलेज में, तुझे बताता हूं मैं पक्का। तू ये हाउ कैन यू से दैट 3I cap dot 3I cap plus 4J cap will be equal to 9 + 12? क्या नया कुछ डॉट प्रोडक्ट का रूल तुमने डिसाइड किया क्या? हैव यू डिराइव्ड सम न्यू रूल टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स? यस, टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं हम? वी मल्टीप्लाई द I cap coefficients, we multiply the J cap coefficient, we multiply the K cap coefficient, and then we add them together, right? यही करते हैं ना हम। तो I cap 3 3 into 3 9। Here what is J cap? Nothing, 0। तो 0 into 4 कितना? 0। समझ में आया? अजय ब्रैक्स थोड़ा ध्यान से बच्चा। अजय ब्रैक्स इज सेइंग दैट सर एम्पियर नहीं आएगा बिकॉज सेंटीमीटर में है। और भाई साहब जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल भी तो हो जाएगा। ऐसी गलती मत करो यार, पक्का शाम का सर हो रहा है। थोड़ा सर ऐसे हिलाओ, थोड़ा सा ऐसे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे। थोड़ा ब्लड फ्लो तो तुम लोग के दिमाग में ज्यादा जाना चाहिए। नाउ आई कैन सी सिद्धार्थ डूइंग द सेम थिंग। डोंट डू दैट, यू विल गेट हेडेक। डोंट डू दैट। आई वाज जस्ट जोकिंग, आई वाज जस्ट किडिंग। प्लीज यार ऐसी गलती मत करो, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। इसका आंसर करो, ट्राई टू गेट द आंसर फॉर दिस। थोड़ा टफ है, लाइक इफ यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर्स इन दिस वन देन तो दिस इज अ काइंड ऑफ माउंट एवरेस्ट फॉर यू, बट दोज हु कैन सॉल्व दिस ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एनीवे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। तो आपका सिर्फ मुझे अटेम्प्ट चाहिए यहाँ पे, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। अरे इन द मॉर्निंग हाउ मेनी क्लासेस यू कैन टेक? 9 o'clock में, from 9 o'clock only one class can be conducted, right? Either it will be physics or chemistry or mathematics or biology. तो कोई एक ही होगा ना। If I'll be taking that class, so chemistry has to be in the evening
or mathematics has to be in the evening, तो कुछ तो change होगा ना. So don't consider that. You should be fresh everywhere. You should be fresh every time. Try to do that. क्या हुआ last slide में? रचित पहले इसको solve कर. Try to solve this first. The potential difference applied to the ends of a wire made of an alloy drives a current through it. ठीक है? The current varies as J is equal to 3 plus 2R, where R is the distance of the point from the axis. Don't worry, Kiran, मैं नहीं लूंगा. If capital R be the radius of the wire, then the total current through any cross section of the wire is. जल्दी से बताइए. Through any नहीं, through the cross section लिख दो. वो तुम सोच लो ना, एक्सिस क्या होता है. वायर आपको कैसा अज्यूम करना है, ऐसा कुछ एक अज्यूम करना है. यू हैव टू कंसीडर द वायर लाइक दिस. ऑलराइट, एक्सिस क्या होगा इसका? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. जब कुछ नहीं बोला तो ठीक है बच्चा लोग, बीच का पार्ट आप इरेज कर सकते हो और अच्छे से समझने के लिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सिस. चलो जल्दी से आंसर करो. Tell me here, current density is constant or variable? Okay, I've got one answer from Vani. Very good. 3 plus 2R into no. Vani, this answer that you have given would be correct if the current density is constant. See, imagine that normal mass density. If density is constant, mass can be calculated as directly mass into volume. But if density is variable, then how do you do that? Then you have to consider a small part, small space where density is constant. And you do, if I ask you to find the total mass, you will integrate rho dV. याद है सबको? वैसे ही कुछ यहां भी करना पड़ेगा. Here you know that delta I is equal to J dot A, right? तो यहाँ पे एरिया, सॉरी, यहाँ पे करंट का और एरिया के बीच में क्या एंगल है? What is the angle between current and area? That will be 0 degree. ठीक है? Because along the axis normal हो जाएगा इसका एरिया का डायरेक्शन. Current is also along this, right? So I will write total current I will be integral J into dA. J into dA. Why am I saying so? So I am going to draw this cross section here. Let me draw that cross section part here. तो कुछ ऐसा सर्कल दिखेगा ना मुझे. So I'm going to get a circular cross section, right? Wire will be in the form of cylinder. So I'll get a circular cross section. At a distance small r from here, what is the current density? 3 plus 2r. है ना? If I say at a distance of 2r from here, so density will be J is equal to 3 plus 2 into 2r. At a distance r is equal to 1 millimeter from here, so J is equal to 3 plus 2 into 1, right? If you change the distance of the point from the axis, this J will change. So you cannot write directly J into total area will be the current. That will be incomplete. That will be actually incorrect. तो क्या करेंगे? We'll find a region where J is constant. तो where we will find the region? तो उसके लिए हमें पता है differential calculus का यूज करते हैं. I will consider a small और I'll consider a circle here. ठीक है? I'll consider one more circle here. And the thickness of that circle will be dr. ऐसा कुछ assume करेंगे. ठीक है? Let me zoom it. This is r. Thickness of this is dr. So can I say that in this part, this shaded part, current density can be assumed as constant.
ऑलराइट गाइस, बताओ बच्चा है कि नहीं? करंट डेंसिटी इन दिस पार्ट विल बी, अच्छा दिस इज नॉट करंट बच्चा, दिस इज करंट डेंसिटी, जे लिखा है ना हमने, यहाँ पे मिसिंग है पार्ट करंट डेंसिटी वेरीज एज, ठीक है? तो कैन आई से इन दिस region I can say current density will be constant. Why? Because if you put J is equal to 3 plus 2R, or if you put 3 plus 2R into R plus dr, it doesn't matter because dr is very very small. So if dr is very very small, so current density in this region, this region will be constant. So I can say that in this region the current can be written as J into di. So what will be the total current? So current through all such regions, so I have to add all the currents here. So integration of J dA, that will be the total current. तो अभी इंटीग्रेट कर दो, J का वैल्यू कितना है 3 plus 2R into dA is what will be the area of this part? बताओ बच्चा लोग, what will be the area of this shaded region? जल्दी से बताओ, एरोनॉटिकल साइंस का क्वेश्चन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग जब करोगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट शेडेड रीजन. वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया. द आंसर इज 2 pi r dr. 2 pi r into dr, because if you are going to cut it you will get a strip, trapezium but rectangular उसको assume करते हैं. And the length of this will be 2 pi r, the width of this will be dr, so the area of this will be 2 pi r into dr. So area of this shaded region is what? 2 pi r dr. Now we have to integrate this. Tell me what is the variable of integration here bachcha log? Small r, right? The variable of integration is small r. From where to where this small r will change? So the total radius of this wire is capital R. So this small r will change from 0 to capital R. Put the value. Solve करिए. तो 2 into pi is constant, take it out. 3r का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 3r square by 2. ऑलराइट, 3r by 2 प्लस 2r into r, 2r square का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 into r cube by 3. लिमिट इज फ्रॉम 0 to capital R. Now put the values. ठीक बच्चा लोग, वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा आंसर? 2 pi into 3r square by 2 प्लस 2r क्यूब बाई 3. तो सॉल्व करें, अद्वैत सॉल्व करके बता सकते थे ना, यू गॉट द सेम आंसर. सो 6 विल बी द एलसीएम. ऑलराइट, 6 विल बी द एलसीएम. सो 3 into 3 9 plus 2 into 3, sorry 2 into 2 4. So 9 plus 4 13. 13 by 6 into 2, so 26 by 6 into pi r square. Now you might say, sir, the unit is what in meter square? No, here पूरे का यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ यूनिट विल बी एम्पियर ओनली. Correct guys? So answer is what? 13 by 3 pi r square ampere. Okay, r cube है क्या? Sorry, my bad. भांग का सर, don't worry. Yeah, r cube है. I thought of r square है. So यही इसी को कोट करेंगे. This is the answer. Yes, Pratish, I know that. Thank you. Yeah, second term is r cube. I thought it is r square. It is r cube. So you cannot add them. You can take r square as common, but you cannot add them. That's it. That's correct. So what is the correct answer here? 2 pi into 3r square by 2 plus 2r cube by 3 ampere. This is the correct answer for this question. ये थोड़ा सा tough था. I know that. This was a bit tough for you. पहली बार ऐसा कर रहे हो. But if you know how to like consider the elemental ring and all, then it is a very easy question. Guys, click yes if you have understood till this point. बच्चा लोग प्लीज क्लिक यस इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट. बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू. अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? उसका रीजन है बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, हियर एज द नेम सजेस्ट, नाम क्या है इस चैप्टर का? देखो ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी. इन दिस पार्ट वी टॉक अबाउट करंट इन कंडक्टर्स. इसमें बात करते हैं करंट इन conductors. Normally when you have a conductor or a substance which can conduct electricity, so without applying any external field or without applying any potential difference, tell me what is the velocity of free electrons
और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स दैट विल बी देयर इन द कंडक्टर? बताइए बच्चा लोग, जल्दी से बताइए। नो, तो एवरेज वेलोसिटी of all the charge carriers inside a conductor in absence of external field is what? Zero. Rohinish, when you see some concept, please read it properly, and then if you ask something na, it will make sense. I know what you are asking, but वो नहीं गलत है बच्चा। तुमने कुछ ऐसा देखा क्या, J is directly proportional to or J is equal to sigma into E, ऐसा देखा क्या आपने? And then you are considering this sigma as charge density. ये sigma charge density नहीं है, ये conductivity है। ठीक है रोहिणेश, तो थोड़ा सा आराम से मैं बताऊंगा सब कुछ, डोंट वरी। Anyway, so without any electric field, the average velocity of charge carriers will be zero. तो लिखता हूं मैं, without any external electric field, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अच्छा, ये चार्ज कैरियर क्या होता है बताओ? इन आवर केस व्हाट विल बी द चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स, राइट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू बी मोर प्रिसाइज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी द चार्ज कैरियर्स। ऑलराइट, सो विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर विल बी जीरो। बट हम जब करंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट, वी टॉक अबाउट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो मूव कैसे कर रहा है? एवरेज तो जीरो है, मतलब रैंडमनेस है बिल्कुल। तो इफ रैंडमनेस इज देयर, एवरेज वेलोसिटी इज देयर, इज जीरो देयर, सो नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी जीरो। तो दिस इज देयर व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, but when we apply an external electric field, there will be some changes that will occur inside the conductor. And what are those changes? So to explain that, let me consider a conductor. ठीक है? So in the presence of an external electric field, ध्यान से सुनना, an external electric field, if this is a conductor, ठीक है, and if I apply an external electric field like this, tell me, will there be any current that will flow from here to here or not? Will there be current or not? Now this is the conductor. Tell me, will there be any current that will flow through it or not? Yes or no? There is a conductor, okay? I have applied an external electric field here by any means. मैंने इधर कुछ positive charge रखा, इधर negative charge रखा. Tell me whether there will be a flow of current that will occur here or not. Yes or no? Few of you are saying yes also. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो take two charges. ऐसा कुछ कहीं ऐसा charge distribution ले लो, here positive or negative, and hold a conductor in your hand and bring it in between them. Will you feel shock? तुम्हें क्या झटका लगेगा? करंट फील होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? कोई भी करंट फील नहीं होगा। Got it guys? तो इस वाले कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं होता, तो ये गलत गलत ऐसे दिमाग में भरना मत। इन दिस केस नो करंट। ठीक है, तो करंट कब फ्लो करता है? आपने तो बोला कंडक्टर है सर, इट शुड फ्लो द करंट, इट शुड अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, बट राइट नाउ यू आर सेइंग नो करंट विल फ्लो, नो चार्ज विल फ्लो। व्हाई? तो कब फ्लो करेगा? रीजन क्या है? देखो, एक्चुअली होता ही है, इफ यू कंसीडर क्योंकि सर यहां से करंट फ्लो करेगा मतलब चार्ज विल अक्यूमुलेट हियर, चार्ज विल अक्यूमुलेट हियर। तो फ्लो ऑफ करंट का मीनिंग क्या है? व्हेन यू कनेक्ट दिस पार्ट, व्हेन यू कनेक्ट दिस पार्ट इन अ सर्किट, when you connect this part in a circuit and a constant potential difference, a constant electric field is maintained there. मतलब क्या है? देखो दिखाता हूं। तो मान लो if you're having this conductor here, this is the conductor I'm talking about, okay? ओहो, क्या हो रहा है? ये फिर से होगा। देखो जादू हो रहा है। Now this pencil has gone out of, now ठीक है।
Now connect these two ends with the battery. ऑलराइट, ऐसा कुछ मैंने बैटरी बनाया. Now because of this battery, what will be the direction of electric field? तो कुछ ऐसा हो गया. This is the direction of electric field. Now in this one I will say there will be flow of current. कैसे फ्लो होता है करंट मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बताऊंगा. Because of this positive and negative terminal, what will happen? यहां जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा चलो, और consider electron here. What will happen to the electron here or electron here? क्या होगा यहाँ पे? Just consider one electron here. What will happen to this electron? Where this electron will try to move? Move towards left, right? इधर की ओर आना चाहेगा. So this electron will move towards this terminal, right? समझ में आया? So once this electron will come to this terminal, what this battery will do? याद करो. Tell me what is the primary function of a battery? To maintain a constant potential difference, to maintain a constant electric field here. So this battery will bring or move this negative charge from positive terminal to negative terminal. All right. Why this is required? Reason देखो. If you take this electron from here, then what will happen? Can I say here one positive charge will be generated? तो ये positive charge हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे भाग के इधर आएगा. So यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आएगा. Now this will become a positive charge. So the electron that you have moved from this end will come to the positive terminal of the battery. It will be moved to the negative terminal of the battery. Then it will be repelled towards the another end, and then again it will recombine with positive charge. It will become neutral. All right, it will become neutral, and the same thing will go on till eternity. जब तक ये बैटरी लगा के रखोगे. इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव चार्ज आया, अगेन इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रलाइज हुआ, then again one electron will come from here, again come back to the positive terminal, battery will again move to the negative terminal will repel it towards the other end, then this negative charge positive charge will recombine, no charge, khalas. This is how the electron will move throughout the circuit. बच्चा लोग समझ में आया how this electron will flow if you connect a conductor inside a circuit or as a part of a circuit, closed circuit. If you are having something like this, no current will flow, क्योंकि वो कहीं एक जगह जाके accumulate होके खत्म हो जाएगा फिर. Alright guys, if you are having this electron here, what will happen? This electric field here some positive charges will come, here some negative charges will come. So induced के कारण some electric field will come in this direction and net field will become zero, and now no current will or no charge will flow in any of the direction. Got it? क्या पूछ रहा है? वही तो बता रहा हूं यार, ध्यान से देखो, लास्ट टाइम बता रहा हूं. If you connect a conductor in a circuit, if you connect a conductor in a circuit where the circuit has been given a battery, a potential difference, so because of this positive terminal, one electron will come to the positive terminal. ठीक है? What this battery will do? This will move this negative charge to the negative terminal, and then it will come back to this end. Why? एक और reason देखो. Now this is negative charge. So because of when this negative charge will be removed from the conductor, what will happen? This will become a positive charge. So when this electron will be moved to this point, now this negative and this positive, they will what? Neutralize. तो फिर से neutralize हो गया. Again this battery will again take one electron from here, move to the negative charge, negative terminal, repelled back here, positive, negative, combine, zero. So this is how this circle is going to continue. Okay बच्चा लोग, समझ में आया? इसी कारण से continuous आपको करंट का फ्लो देखने को मिलेगा if you connect a conductor inside a circuit. Alright, बहुत बढ़िया. अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अभी ध्यान से देखो, नॉर्मली इनसाइड अ कंडक्टर हमें क्या देखने को मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ कंसीडर दिस इज दैट कंडक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. ये क्या है? हमारा कंडक्टर है. So we'll be having some electrons like this, like this.
and where they'll move in all the directions like this. हर एक डायरेक्शन में रैंडम रहेगा. So in absence of electric field, this is the motion of the electrons. ठीक है. But if you apply an electric field across a conductor, then what are the changes that will occur? देखो ध्यान से. Consider one electron. पहले क्या करता हूं? One electron लिखता हूं. And let us say direction of electric field is in rightward direction. ये सर्किट का पार्ट बनाया है, बट मैंने वो दिखाया नहीं. ठीक है. Tell me in which direction this electron will try to move. In which direction this electron will try to move? बताइए. लेफ्ट, राइट? चलो बहुत बढ़िया. तो लेफ्ट में इसको करते हैं मूव. तो छोटा सा इलेक्ट्रॉन लिखता हूं मैं. ठीक है. So it will try to move in leftward direction. But in this conductor, is it the only one free electron? No, na? Millions of them will be there. So let us say there is one more electron that was there. So one electron come into the way of this movement. If this is the only free electron that is there in the space, it will move directly. It will move towards left, आराम से. But inside that some ions will be there, positive charges will be there, the electrons will be there, right? तो क्या होगा? यहाँ पे एक और electron आ जाएगा. So what will happen? It will repel. It will collide with it. So because of external electric field, it will move in this direction and it will collide with it. After collision, what will happen? In which direction this electron will go? It can go in any of the direction. Reason क्या है? Because this electron might be going in any of the direction at that point of time, because millions of electrons will be there. So let us say after collision, this will move in this direction, but for an instant, बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए ये collide करेगा and then it will try to move in this direction, but again electric field is there. So this electric field will again give this electron a velocity in leftward direction. ऑलराइट बच्चा लोग, तो ये हो गया पहले कोलिजन के बाद की. अच्छा, देन अगेन देयर माइट बी वन मोर इलेक्ट्रॉन दैट इज देयर इन द वे. एक और इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट? अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा, वो क्या करेगा? अगेन देयर विल बी सम कोलिजन दैट विल अकर, राइट? सो आई डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. इट माइट बी गोइंग इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. सो फाइनल वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन कैन बी इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. So let us consider the direction of electron or velocity of this electron after collision is this. ऐसा कुछ दिखाया. But this will be for a very short span of time because again electric field is there in rightward direction. So because of that electric field, it will try to move in left direction. So again it will move in leftward direction. फिर से मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आया, इसने मान लो फिर से कोलिजन किया. नाउ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन. ऑल राइट, सो दिस इलेक्ट्रॉन हैज नाउ कम हियर अगेन. देन इट विल अगेन कम बैक. इट विल अगेन मूव इन व्हाट? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ टेल मी, इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ motion of the electron, then what will be your answer? What will be the direction of motion of the electron here? Tell me. No, I will not say random. This velocity is for very very small time. मतलब जैसे टकराया, इधर जाना चाहता, फिर घूम गया, ऐसा हुआ. देखो, moving in this direction, got it here, then again this, got it here, again this. So on an average, if you see the motion of electron, can I say direction of motion of electron is in leftward direction? But before that, when this electric field was not there, this motion, this part of the motion was missing. So there was a lot of randomness. Still there are some randomness here, but this is what an extra factor here. And all of them are in the same direction. So what is the average direction of, what is the motion of the electron if you see as a whole cumulative part? I'll say direction of electron is towards left.
So this kind of motion of the particle is called as drifting. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं this kind of motion of electrons is called as drifting. समझ में आ रहा है? Just imagine billions of electron doing the same part. If you see them collectively, if you see them पूरा का पूरा as a whole, you will find that there are so many electrons that are moving in leftward direction पूरा आराम से. स्लो नहीं, बहुत फास्ट होता है. स्लो कैसे बोल रहे हो? बहुत फास्ट होता है. ठीक है बच्चा लोग, तो ये मुझे मिला इलेक्ट्रॉन का मोशन का नेचर की. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स विल मूव if you apply an external electric field across a conductor. अच्छा, अब देखते हैं. Now what is drift velocity then? What is the drift velocity then? So I'll say drift velocity is defined as the average velocity of electrons in the presence of external electric field. This is called as the drift velocity. अच्छा, इसका value कैसे निकालें? How can we find the value of this? So what I'm going to do, I can say for sure that the nature of motion between two successive collision. See, यहाँ पे था, now it collided with this. Then again it collided with this. So can I say nature of motion between two successive collision is exactly identical? क्या identical है ना? Zero से. Just after collision, what is the average velocity? Zero. Randomness है पूरा. If I talk about all the electrons, what is the average velocity of the electrons just after collision? Zero. ठीक है? Then again it will collide. Again the average velocity comes to zero. So if I consider motion of electron between two successive or between a successive between a collision, can I write V is equal to U plus AT here? मैं कौन सा मोशन की बात कर रहा हूं? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ कोलिजन. तो व्हाट विल बी द, इफ आई राइट दिस V is equal to U plus AT, can I say this is wrong? Correct? Reason क्या है? Because acceleration will be equal to where acceleration of the electron will be equal to small e into capital E divided by small m, where E is the charge of the electron, capital E is the electric field of the external electric field, m is the mass. So force per unit mass, where small e is constant, capital E is constant, small m is constant. So I can say acceleration is constant, so I can use the equation of motion. All right, तो अभी देखिए, now if I take average of these parts, so if I write this V is equal to U plus E capital E divided by M into T. If I take average of this part, इसका average ले रहा हूं मैं. So can I say I'm going to take this average of this part, that is V is equal to, tell me what is the value of this part? U मतलब initially क्या होगा? Just after collision it will be 0, so I'll say this will be 0, plus can I say small e capital E m is constant, so I can take it out, and I can say we have to take eventually the average of T part. What is the average T part? This is the time between two successive collisions. This is called as the average time. This value is called as average time between two successive collision, and this is called as tau. इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? Tau. And can I say depending on an electronic structure, depending on the electronic structure, this will be constant. So for a material, this will be a constant. This will be constant for a conductor. All right. What is this V bar? What is the average of this? Can I say this is nothing but this drift velocity?
तो I will replace this V bar as VD, and this VD can be written as E capital E tau divided by small m. So this is the value of drift velocity. Now if you increase the electric field, this drift velocity will increase. If you decrease the electric field, drift velocity will decrease. समझ में आया बच्चा लोग? अरे नरेन, तू पहली बार क्लास कर रहा है क्या यार? Like, have you not studied what is electron? Sorry to say this, बच्चा, but I seriously don't encourage this kind of doubt. Seriously, right now I can't say anything but this. I will never encourage this, that you will be asking what is the value, what is this small e here? Have you not studied electrostat? Do you know what is electron? Do you know what is the charge? How do you represent charge of an electron? Don't you know what is force on a charge? Q into E. Q is what? Small e. Are you reading this electrostat or charge for the first time? Please think for a second now before asking these kind of doubts. I seriously don't encourage this kind of thing. थोड़ा ध्यान से समझ के कुछ पूछा करो यार, समझा करो अच्छे से. Yes, Atharva, tau will be given to you. For every material, this tau will be constant. So for a material, this tau will be constant. तो tau क्या है? Material का property है. Tau is what? Material property. It will be given to you. हाँ, you can like calculate it. Average time is mean free path divided by drift velocity. You might have studied this in kinetic theory of gases, right? But normally in current electricity, it will be given to you. You don't have to calculate. All right? Okay. So ध्यान से देखो. तो यहाँ VD क्या मिला? It depends on the electron, electric field, tau and m. Alright, but chalo, what are the factors that you can change? What are the factors that you can change? बताइए. Can you change the mass m here? You cannot change mass. Mass of electron क्या है? Constant है. Can you change small e? No, you cannot change small e. Charge of an electron, that is the charge carrier, right? So that will be constant. Can you change this tau? Yeah, you can change tau if you change the material. If you change the material, this tau can be changed. Can you change electric field? Yes, you can change electric field. If you change the battery, if you change the external electric field, this VD will change. So if you apply a greater potential difference, if you apply a battery of greater potential difference, this electric field will be more. So VD will be more. VD क्या है? A drift velocity. That means velocity of electron with which it will move, right? So hence we can say that if speed will increase, so rate of charge or the flow of charge in 1 second will move more, will increase. समझ में आ रही बात? VD क्या है बच्चा लोग? VD is the speed. If you increase the speed, so I can say charge that will flow in 1 second will also increase. Initially, let us say speed is 1 meter per second for the charge. Now if I increase it, so 2 meter per second. So can I say all the charge will move, like there's so many charges that will move in 1 second, right? So if you increase the value of E, this VD will increase, and so the current through a cross section will also increase. ठीक है बच्चा, समझ में आया? Similarly, if you increase this tau, what will happen? Tau increase करने पे क्या होता है? तो ये दिमाग लगाना, सोच के आना कर, ठीक है? तो मटेरियल का ये कांस्टेंट है, ठीक है? It depends on what? Material. If you change the material, if tau increases, what will happen to the current through it? Try to analyze this. All right? बहुत बढ़िया. So guys, please try to remember this formula. This is very, very important. अच्छा, what will be the direction of drift velocity बच्चा लोग? What will be the direction of drift velocity? What will be the direction of drift velocity? फंस गया ना? See, if I ask you drift velocity of electron, then what is the direction of drift velocity? बच्चा लोग देखो, electric field था rightward, तो electron किधर गया? Leftward. So drift velocity of electrons will be in the opposite direction of electric field. All right. Drift velocity of positive charges will be along the direction of electric field. Clear है? बहुत बढ़िया. Now try to get the answer for this question. Time हो गया क्या? 1 मिनट बचा हुआ है. See, what will be the answer for this? Let me solve this. क्या पूछा है? Drift speed of the electrons when 1 ampere of current exists in a copper wire of cross section 2 millimeter square. The number of free electrons in 1 centimeter cube is 8.5 into 10 to the power 2. तो हमें क्या चाहिए था बच्चा लोग?
E, कैपिटल E, टाउ एंड M. बट मुझे तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं. मुझे क्या दिया है? आई नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल e, आई नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल E. डू आई नो द वैल्यू ऑफ कैपिटल E? ध्यान से देखो, दिया है कि बच्चा लोग? नहीं. आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल E हियर. डू आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ हियर? आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ हियर. सो आई कैन नॉट फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूजिंग दिस रिलेशन. तो क्या होता है इसके बाद? आफ्टर दिस विल स्टडी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. ठीक है? सो आफ्टर दिस विल स्टडी टुमारो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी. ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया क्या? ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर लेफ्ट हियर. सो टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस वन. Thank you guys. Thank you for attending the class. Stay safe, stay healthy, and enjoy Madi. Have a good night.